Good morning. In the last class, we have discussed questions of exercise 4.1, which were based on the concept of line segment, ray, intersecting lines, and parallel lines. Now, today we will be doing exercise 4.2, and in this, we are using only two concepts of basic geometrical ideas. One is curve. Curve is anything which I can draw without lifting my pen. Okay, this is curve, simple curve. And the second one is polygon. Okay, second क्या है polygon. For this is curve, and for any figure to be polygon, there are two important conditions. किसी भी shape को polygon होने के लिए दो शर्तें हैं. Okay, two conditions हैं. If any figure is satisfying that two conditions, means the given figure is a polygon. Okay, first condition is that it should be a simple closed curve. ठीक है, वो एक simple closed curve होना चाहिए. Simple closed you all understand. Simple means the curve, like this is a simple curve. If it will intersect like this, okay, means the curves points are intersecting, then it's not a simple curve. This is a simple curve. You can take a circle. A circle is an example of simple curve. So in simple curve there should be no intersection. So for polygon it should be a simple closed curve. And second important condition is it should be made up of line segments. ठीक है, वो किससे बना हुआ होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए. एक तो होना चाहिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओपन भी नहीं होना चाहिए. दिस इज क्लोज्ड बट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. This is also closed curve, but this is also not made up of line segment. This is the difference between curve and polygon. Only two concepts we will be using in this exercise 4.2. The first question is classify the following curves as open or closed. आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है और आपको बताना है कि वो ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व. लेकिन ये पार्ट दिस इज ओपन कर्व. B part, something like this has been made. This is a closed curve. Again, ये तो open तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं. जो बंद नहीं है वो open है. Open curve. And then one triangle is made. This is also curve, but this is closed curve. Okay. One more diagram is given. E part B जो हमारा है वो closed curve. This kind of diagram is made. This is also closed curve. Okay. So we can easily identify the difference between open curve and closed curve. That we can only tell by looking at the diagram. Okay. Now question number 2 is. Question number 2 में क्या है? Draw rough diagram to illustrate the following. We have in A part we have to draw some open curves. You can draw any open curve like this. Okay. This is open curve, and in closed curve also you can make any closed curve. ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हो. ओपन क्लोज्ड, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें आपको समझाया जाए इन सिंपल लैंग्वेज. थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर. एनी पॉलीगॉन के लिए क्या है? इट शुड बी सिंपल क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. This is also a polygon, simple closed and made up of line segment. This is also a polygon, simple closed and made up of line segment. हम एक familiar सा polygon बना देते हैं.
square. I have drawn square, and they are saying shade its interior. Through this question, they want to know from you that whether you know about interior and exterior. Interior means this is interior portion, and the exterior is outside. So we have to shade its interior. Okay. Now question number 4. Consider the given figure and answer the following questions. फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे, आपको एक फिगर बना के दिया हुआ है. इट्स अ काइंड ऑफ स्टार. ओके, दिस फिगर इज मेड एंड वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन. इज इट अ कर्व? क्या ये कर्व है? आंसर इज यस. देखो, कर्व जरूरी नहीं है कि गोल होना चाहिए या लाइन सेगमेंट से ही बनना चाहिए. कर्व कुछ भी जो घूमा हुआ है, ठीक है, मतलब टर्न हो रहा है. Okay, this is not a curve, right? This is a curve. Okay, so this is a part में पूछा है, is it a curve? So answer will be yes, it is a curve. Then they are asking, is it closed? It's quite obvious. Yes, it is closed curve. Okay. Similarly, in last question, that is question number 5, we have to illustrate. Illustrate का क्या मतलब होता है? Give example. Illustrate means example. So, in last question, we have to illustrate. We have to give examples for in each of the following with a rough diagram. ठीक है? हमें सारे example diagram बना के देने हैं. फिर क्वेश्चन हम देखेंगे. ए पार्ट में रफ डायग्राम बनाना है और क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन. मतलब क्लोज तो होना चाहिए पर पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए. तो ये बना दीजिए. दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. सिंपल बनाना है. बी पार्ट एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट. ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ओपन कर दिया, लाइन सेगमेंट से भी बना दिया. सी पार्ट, अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स. एक ऐसा पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स. देखो, चलो ये एक साइड बना दी, ये 2 साइड बना दी. क्या ये पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन की पहली कंडीशन क्या थी? इट शुड बी अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. इज इट पॉसिबल टू क्लोज एनी फिगर विथ 2 साइड्स? नो. So this is not possible. It's not possible to have a polygon with 2 sides. ठीक है? What does it means? Means for any figure to be a polygon, minimum we need 3 sides. तीसरी साइड और मिलेगी तो ये polygon मेरा closed हो जाएगा. Okay? So this is not possible. C diagram is not possible. A का और B का हमने बना दिया है. This was the most simplest exercise. Exercise 4.2. We have done questions based on the concept of curve and polygon. Okay. Now we are moving towards the chapter. Now in the third exercise, which we will be discussing. Okay. We will discuss the concept of angles. ठीक है? Angle बहुत समझ में आ जाए, सिंपल है. ओके, एंड वी विल नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, देन इट मे क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल प्रॉपर्ली. यू कैन लुक एट दिस एंगल. ओके, दिस इज एंगल. दीज आर द 2 आर्म्स. आई एम मेकिंग अ जनरल एंगल. ये दोनों क्या है? आर्म्स ऑफ एंगल है. दिस इज वर्टेक्स ऑफ एंगल. Okay, these are the arms of angle. This is O is vertex of angle. Now we will look at some of the questions of exercise 4.3. First question is, name the angles in the given figure. This is the diagram. Name of the diagram is A, B, C, D.
दिस इज द पॉलीगॉन विद 4 साइड्स। एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स हैं, इसके 4 साइड्स हैं और हमें 4 एंगल्स भी दिख रहे हैं। और इस 4 साइडेड पॉलीगॉन का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। व्हाट डू वी कॉल इट? क्वाड, QUAD, क्वाड मीन्स 4, क्वाड्रिलेटरल। Okay, so this is the 4-sided polygon and it is called quadrilateral. Okay, for about quadrilateral you will learn more in next exercises. We have to name the angles in this quadrilateral. एक है एंगल A। देखो सिर्फ हम A नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे उसको? एंगल DAB। जिस एंगल की नेमिंग करनी है उसको बीच में लिखेंगे। इधर आई कैन राइट DAB और आई कैन राइट BAD। इट्स आवर चॉइस। मैंने DAB लिखा है, आप BAD भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मुझे नेमिंग करनी है B की, तो B को मैं लिखूंगी ABC, एंगल ABC। तो वो सेंटर में जो आ रहा है ना मेन, हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है C पॉइंट, इसका मैं नाम रखूंगी BCD, एंगल BCD। एंड द लास्ट वन इज D, इसका हम नाम रखेंगे एंगल CDA। So you can see that all the 4 vertex has been used for naming the angles of the quadrilateral। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसकी नेमिंग करनी है। Now we will look at question number 2। Question number 2 में क्या है? In the given diagram, name the points। The diagram is made like this। डायग्राम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू विदाउट ड्राइंग अ डायग्राम, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली? आई थिंक नो। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम आल्सो, यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ ड्राइंग डायग्राम, एंड डायग्राम ऑलवेज ड्रॉ विद पेंसिल। ठीक है, हमेशा डायग्राम से वी आर हैविंग टू पेंसिल्स। If by mistake you have drawn something wrong, you can erase it, okay, and it will look beautiful also, neat and clean. In maths, cleanliness is important while doing the questions. So this is the diagram. Now we have to name the points. We have to name a point in the interior of angle DOE. DOE बोलेंगे हम DOE। DOE के इंटीरियर में कौन सा एंगल है? इस एंगल के अंदर में, दैट इज A, पॉइंट A। B पार्ट में क्या है? इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। EOF के एक्सटीरियर में कौन सा है? दैट इज C, पॉइंट C। Then they are asking on angle EOF। EOF के ऊपर कौन सा एंगल है? That is point B। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। डायग्राम बस कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी क्वेश्चंस इन्होंने बहुत इजी पूछे थे इस हिसाब से। Now you can look at last question of this exercise. Very small exercises are there, so in one day we can do 2 exercises, but no need to run. Okay. First you understand, draw the diagram beautifully and then write down the answers. Diagram with pencil, question with black pen and answers with blue pen. Okay. Now in third question we have to draw rough diagram of 2 angles. ऐसे 2 एंगल बनाने हैं, such that हर बार 2 एंगल बनने हैं। A पार्ट में है 1 point in common। पहले देखो 2 एंगल बना देते हैं। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, OAB और C। ठीक है, इसमें कॉमन पॉइंट हमने क्या ले लिया है? O। ओके, सो वी कैन राइट एंगल AOB एंड एंगल BOC have O as common point। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? 2 points in common। अगेन 2 एंगल बनाने हैं, सेम हम यही बना सकते हैं।
अभी देखो इसमें अगर एक पॉइंट कॉमन बताना था, मैंने ओ बता दिया, 2 पॉइंट कॉमन बताने होंगे तो ओ बी, सेम डायग्राम यू विल ड्रॉ, सेम डायग्राम एंड स्टेटमेंट यू कैन राइट। देखो ए ओ बी और बी ओ सी में ओ और बी दोनों पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, सो यू कैन राइट एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी have O and B as common point। ठीक है, बहुत सिंपल से था। 3 points in common। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे यहाँ डायग्राम सबका सेम बनना है क्योंकि सब में 2 ही एंगल बनाने हैं ना। अब देखो यहाँ 2 पॉइंट तक कॉमन है, तीसरा पॉइंट एक और बढ़ा दो यहाँ पे डी और लिख दो ओ बी एंड डी इज कॉमन। देन फॉर डी पार्ट 4 पॉइंट्स इन कॉमन, सेम डायग्राम, ओ डी और ई, पॉइंट्स बढ़ाते जाइए बस। इसमें देखिए 4 पॉइंट्स कॉमन आ गए, O, B, D and E is common and last is one ray in common। Again the diagram will be same। ठीक है, डायग्राम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। O, A, B and C। ठीक है, एक रे कॉमन चाहिए, सो रे OB is common, okay, and in all you can mention that angle AOB and angle BOC have this as common, this as common, this as common। ठीक है, so in this way you can complete your exercise 4.3 also, in which we have discussed the concept of angles। Okay, this third question, all the diagrams are same, only you have to name that which points and which ray or how many points they want as common। So till now, till exercise 4.3 we have discussed line segment, ray, intersecting lines, parallel lines, then curves, polygons, and today we have discussed angles also। So this much we have discussed। Now the next concepts of basic geometrical ideas we will discuss in our next video। Thank you everyone।